सो हेलो गाइस, ट्राई हैक मी डे 3 में आप लोग का स्वागत है। आज का जो हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं, इसका टाइटल या टॉपिक बोल सकते हैं, ये कैरियर इन साइबर। ओके, इसको हम आज कर रहे हैं ट्राई हैक मी में, जो डे 3 के अंदर पड़ रहा है। तो यहाँ पर पहले तो हम जो अपना सीखने वाले हैं कि वांट ए कैरियर इन साइबर सिक्योरिटी, एक्सप्लोर व्हाट दैट कुड लुक लाइक फॉर यू। तो यहाँ पर ये जो रूम है ना, इस रूम के अंदर क्या क्या सीखेंगे आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। और अगर आप किसी भी जगह अटक जाते हैं तो इस वीडियो की मदद से आप बाहर आ पाओगे। तो चलो, पहले तो इंट्रोडक्शन में बोल रहा है कि साइबर सिक्योरिटी हैज मेनी करियर पाथ, फ्रॉम ब्रेकिंग इनटू सिस्टम्स offensive security to defending organizations from attacks. Defensive security, you don't need a specific background to start. बोल रहा कि कोई स्पेसिफिक बैकग्राउंड से स्टार्ट करने की जरूरत ही नहीं है। इफ यू enjoy solving problems, being curious, or understanding how things work, you will likely find a role that fits you. Why get a career in cyber? High demand, over 3.5 million unfilled roles, और बोले कि strong salaries, constant learning। ठीक है, are you ready to learn more about some of the leading roles involved in cyber security? Let's begin. Answer the question below. How many unfilled cyber positions are there? Okay, यहाँ पर बोल रहा है कि join this room। तो चलो यहाँ पर रूम में ज्वाइन करते हैं, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अनफिल्ड जो रोल्स है, यहाँ से इस क्वेश्चन को किया गया है। 3.5 स्पेस इसके बाद मिलियन। ओके, अब देखते हैं कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स अर्न हुए हैं। आंसर जो है करेक्ट है। अभी जा रहे हैं हम सिक्योरिटी एनालिसिस पे। चलो, यहाँ पर बोल रहे कि रीड फर्दर इफ यू आर डिटेल फोकस्ड, क्यूरियस एंड लव पजल। Security analysts are often referred to as the digital defenders of the organization site on the blue team। यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं। ए ब्लू टीम comprises cyber security and technology professionals who aim is to protect an information system from impending cyber threats by performing and implementing डिफेंसिव एक्शन। तो ब्लू टीम क्या है, इसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। दिस पीपल मॉनिटर, इन्वेस्टिगेट एंड रेस्पॉन्ड एक्टिविटी टेकिंग प्लेस ऑन ऑर्गेनाइजेशन डिवाइस एंड नेटवर्क, प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो साइबर सिक्योरिटी है, इसका क्या काम है, ये बताया गया है। ठीक है, यूजिंग देयर स्किल्स, सिक्योरिटी एनालिस्ट इन्वेस्टिगेट एंड पीस टुगेदर पोटेंशियल सिक्योरिटी इंसिडेंट्स known as alert to decide if further action is needed to respond appropriately। अगर उनके जो स्किल होते हैं, उस स्किल्स की मदद से, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का स्किल होता है ना, स्किल की मदद से सिक्योरिटी को एनालिस्ट और इन्वेस्टिगेट, ठीक है, किया जाता है। उसके बाद अलर्ट कराया जाता है या रेस्पॉन्ड करते हैं कि क्या होगा, किस प्रॉब्लम के क्या सोल्यूशन होगा। एक काम है डिफेंस करना। एक्चुअली डिफेंस करना साइबर सिक्योरिटी में काम रहता है, किसी भी चीज़ को हैक करना काम नहीं रहता। तो बहुत कुछ यहाँ पर ऑप्शंस है, रोल्स है। तो हम लोग इस जो ट्राई हैक में है क्यों कर रहे हैं, ट्राई हैक में से हमें ट्रेनिंग मिलता है, एक लाइव हैकिंग का प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ऑफिशियली लीगली। ठीक है, और मेरा यहाँ पर वीडियो बनाने का मकसद ये है क्योंकि मैं जब यहाँ पर पहली बार ट्राई हैक में यूज़ कर रहा था,
कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे करूँ, क्या करूँ? इसीलिए आप लोगों के लिए एक वीडियो बना के ला रहा हूँ कि अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत होता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिलने में दिक्कत होता है, तो आप इसको देख के, समझ के उसके बाद प्रैक्टिस कर पाएँ। तो चलो, a typically day as security analyst involves monitoring activity taking place on the device and network of the organization, investigating unusual suspicious activities such as strange logins, and we're piecing together information to understand what has happened, when, and how, working with other teams and input. देखो, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं खुद सीख रहा हूँ और आप लोगों को पता भी चल रहा है कि मैं यहाँ पर सीख रहा हूँ ये वाला चीज़। आप लोग भी मेरे साथ सीखना स्टार्ट कर दिए और एक फ़ायदा ले सकते हैं कि जहाँ पर भी आप लोग अटक अटक जाओगे, आप मेरे वीडियो से उसको क्लियर कर पाओगे। यहाँ पर प्रोग्रेशन देखते हैं। सिक्योरिटी एनालिस्ट इज ए ब्रॉड एंट्री पॉइंट इनटू डिफेंसिव सिक्योरिटी विद मेनी पाथ्स टू स्पेशलाइज लेटर। You can move into areas like threat hunting, incident response, or malware analysis. Incident responder handle active attacks while malware analyst examine tools code used by attackers. Answer the question. Security analysts play a significant role and organization. ठीक है, यहाँ पर बोल रहे हैं security analysts play a significant role in an organization. यहाँ पर मुझे लगता है डिफेंस होगा। डिफेंस तो नहीं हो रहा है। यहाँ पर चलो थोड़ा रीड कर लेते हैं। यहाँ पर डिफेंस डिफेंस होगा। वेट, डिफेंस। ओके, करेक्ट है, हाँ डिफेंस ही होगा। बोलो सिक्योरिटी एनालिस्ट प्ले सिग्निफिकेंट रोल नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं इसको, इस वाला लाइन को, प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस। ओके, चलो ये तो करेक्ट हो गया। अब सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में जाते हैं। यहाँ पर जाके फट से हम लोग व्हाट इज द name for the type of device that security engineer would responsible for maintaining. Okay, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। बोल रहा है कि इफ यू enjoy problem solving and building things, तो at a high level security engineers build and maintain system and process that protect an organization network and device, uh, and are known as to architects of cybersecurity. For example, security engineer will be responsible for maintaining intrusion detection system, which can be considered security camera within an organization digital environment. System like this use mixture of a rules intelligence to detect prevent attacks from occurring. A typical day as the security engineer involves designing and maintaining security system, keeping up to date latest and greatest hacker technique being used, documenting process and procedures, assessing risk, and making sure system and application are protected against vulnerabilities. Security engineers is already specialized defensive role. सिक्योरिटी इंजीनियर स्पेशलाइज क्या करता है डिफेंसिव रोल में, तो बट यू कैन गो इवन डीपर इनटू एरियाज लाइक एप्लीकेशन सिक्योरिटी और क्लाउड सिक्योरिटी.
The skill you will transfer well into others field and offensive security. Bro, what is the name for the type of device that a security would be responsible for maintaining? Intrusion detection system, ये वाला होगा। IDS दिखाई दे रहा है ना, ये होगा। इसका चेक कर लेते हैं। चलो, इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट जाने के बाद what दिस में align with you, are you mathematical and curious? यहाँ पर what process do penetration tester follow when testing or organization for weak? What process do penetration testers follow when testing an organization for weakness? वीकनेस फाइंड करता है। चलो, ये टेस्टिंग इज ए स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग पॉइंट। या फिर यू कैन स्पेशलाइज वेब एप्लीकेशन टीमिंग सिमुलेटिंग अटैकर्स ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्विंग टेस्टिंग सिक्योरिटी। you may penetration tester job is company system and back to them. They search weakness and vulnerabilities, exploit the real hacker would be safe and control everything agreement company penetration. What process do engagement देखते हैं। यहाँ पर ये वाला लाइन थोड़ा पढ़ लीजिए। दे सर्च फॉर वीकनेस एंड यहाँ पर vulnerabilities and then test if those can be exploited just like a real hacker would, but in safe and controlled way. Everything is done under agreement between the company and the penetration tester. This process is known an engagement. देखिए, जब पेनिट्रेशन टेस्टर का काम क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पेनिट्रेशन टेस्टर को हायर करता है कि आप लूपहोल्स या वीकनेस या क्या खामियां हैं हमारे सिस्टम में, आप ढूंढ के दीजिए। ठीक है, सिर्फ बातों से नहीं होगा। वो लोग एक प्रोसेस करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं राइटिंग में। वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन सिग्नेचर करके देगा कि हाँ, हम लोग परमिशन दे रहे हैं, रिटन परमिशन, कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकता है। इस प्रोसेस को बोला जा रहा है कि एंगेजमेंट। ओके, यही था हमारा सवाल। चलो, अभी नेक्स्ट में जाते हैं। कंप्लीट आवर इंटरेक्टिव करियर क्वेश्चन। चलो, अभी स्टार्ट करते हैं इसको। अभी कुछ क्वेश्चन से हमें पूछा जा रहा है कि विथ न्यू टेक्नोलॉजी आई लाइक टेस्टिंग थिंग्स केयरफुली। ओके, और बोल रहे कि वाचिंग हाउ इट्स वर्क्स बिफोर मेकिंग एनी चेंजेस, रीडिंग द मैनुअल फर्स्ट, jumping and I learning as I go, looking for security features. New technology I like. Okay. You have got defenders I always scanning. Okay. When I hear about hackers in the news, when I hear hackers in the news, think about how the hackers got in, want to know why it is, why not stopped, why I could stop the attack, wish I could have, want to be like the, wonder how the attacker could have been stopped, want to know why it is,
think about the hacker got in? चलो, most likely buy a video game that big brain place detected. Probably already. A computer has suddenly stopped working. Try and recreate the problem to understand it. Go straight logs, find out what happened. When working on a group project, review my teamwork. Make sure things are on time, matches, and even tasks. Create a plan structure for the team. My friend think their emails have been hacked. I first try to figure out how hacker got in. Check for login attempts and alert to confirm the hack. यहाँ पर जो करियर इन साइबर सिक्योरिटी है तो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट में जाने वाले हैं, तो उससे पहले चलो, ये वाला तो ग्रेट वर्क, ये वाला अपना कंप्लीट हो चुका है।